भाग नहीं है वंदे। नया ये भारत देश है मेरा, नया ये भारत देश है मेरा, सबसे निराला सबसे सुनहरा, आओ बनाए देश हमारा सबका प्यारा। हम जो एक तो कदम एक है, नई दिशा की कसम एक है, नई उमंग है, नई तरंग है, जोश जोश है सरफरोश है, नए सवेरे की आगोश है, नई उमंग है, नई तरंग है। A canvas of colour, music, song and dance spreading across the stretch of Rajpath with a fabulous spirit of festivity, the cultural legacy that India is richly blessed with. Vande Bharatam. And very soon on Rajpath we will have the brave women motorcyclists of the border security force known as Seema Bhavani. राजपथ पर उपस्थित जनसमूह वंदे भारत की अविस्मरणीय प्रस्तुति से आह्लादित, एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिलक्षित करती हुई ये प्रस्तुति, और उधर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शान से लहराता तिरंगा हमारे गणतंत्र की प्रगति और चौतरफा विकास का परिचायक। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का। देश भर से चयनित कलाकार, मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट, सामरिक शक्ति, भारतीय संस्कृति, लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर। अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की। सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। Illustrating the power of women in the world, you have the Border Women's Salute under the command of Inspector Himanshu Sirohi. A spectacular display of their hard work, dedication and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single Sub-Inspector Sonia Bhavari presenting her salute to the Supreme Commander. महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन चेयर राइडिंग। कांस्टेबल अनिमा कुमारी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चेयर राइडिंग फॉर्मेशन में और सामाजिक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिवर्स राइडिंग करते हुए ये टीम सुदृढ़ सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद। Constable Rajvinder Kaur with double back riding, and behind her we've got
Constable Anupam Kumari with opposite direction side riding double. सीमा भवानी की ये जोशीली टीम जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से। Participating after 4 years, after their debut in 2018, this is indeed a fabulous moment for all of us to take pride in the power of women, and especially the women of the BSF. अभिनंदन कांस्टेबल गुरप्रीत और कांस्टेबल खुशबू के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम और गुलिस्तां का प्रदर्शन, गुलदस्ता, एरोबिक, हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ 12 सदस्यीय टीम बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनसमूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न। और अब पिरामिड फॉर्मेशन, सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड, कांस्टेबल उषा देवी, कांस्टेबल श्रुति आयरोली, कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल। The pyramid formation by Constable Usha Devi, Shruti Airoli, Meeta Hansda, Pandey, Preeti Rani, Sheenu, Rekha and Amanda. And now we've got the ITBP Himveers under the command of Inspector Guard Rajneesh with 4 other riders presenting the salutation to His Excellency, the President. भारतीय सीमा के हिमवीर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रहरी यहाँ राजपथ पर लोटस फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते, कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ 15 जवान आकर्षक फॉर्मेशन में और उसके ठीक पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन, कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। Horizontal bar exercise. Fitness is the way of life for these brave soldiers, the ITBP. We've also got the 6 men balance, a magnificent display of balancing techniques. Constable Sandeep Kumar and Constable Raman Singh leading this dangerous act. एरो फॉर्मेशन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान अद्भुत संतुलन, सतत अभ्यास और साहस का परिचय। और कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा और आमतौर पर हम देखते हैं जमीन से, लेकिन इस बार आसमान से भी नज़ारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास्ट के दौरान उन्नत वायुयानों का। और यहाँ सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। The grand finale of the 73rd Republic Day Parade with a fabulous display of balance and skill. The jaguar positions, the symbol of spirit of the snow warrior, conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Narmendra, Ashok Kumar and Vivek Khokar. All eyes now focusing on Rashtrapati Bhavan, from where we will have the flypast by 75 aircraft of the Indian Air Force and the Indian Navy participating in that grand show. So we saw perfect balance, total concentration and absolute discipline here on the ground. It's a windy day, so the wind definitely plays a role in getting the balance right. And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5
ALH aircraft in Arrowhead formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander GDK Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the fly past from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। और इसके बाद तिरंगा फॉर्मेशन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming in the direction of saluting base, we have the Tiranga formation, led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik, and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The Tiranga going past the saluting base. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है, यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं। और अब एकलव्य फॉर्मेशन नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक MI-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills and delight the public. And now we look forward to Tangel. This formation comprising 1 Dakota aircraft in the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in Vic formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. We roll in for a very spectacular aerial display with cameras specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go, touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. और अब त्राण फॉर्मेशन
इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रविनंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत, विंग कमांडर हरिओम दुबे। and a host of advanced electronic warfare equipment, all indigenously designed and developed by The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. We now look forward to the next formation. This is the Netra formation. Group Captain Pranjal Singh with Squadron Leader Rahul Yadav. The Su-30's Group Captain Arpit Khanna with Squadron Leader Aditya Sinha. Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari. And the MiG-29's Group Captain K.D. Singh. Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल विमानों का अगला फॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं, अनुशासन, समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं। India's extremely potent long-range So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. 29 scored by Captain S.S. Sambyal and और अब Commander C.B. वरुण फॉर्मेशन formation. नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामव्यात सुदीप। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे दो MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट हैं MiG-29 के कैप्टन S.S. सांब्याल और विंग कमांडर C.B. भट्ट। अगला फॉर्मेशन 5 रफाल लड़ाकू विमान 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से Excitement galore at the Republic Day parade right now. Speed, pulse racing, daring, and of course there is precision. Wing Commander M.K. Singh, Wing Commander Abhishek Tripathi, Wing Commander Arun Kumar and Wing Commander A.D. Chowdhury. Formation airborne from Air Force Station Jodhpur. 5 twin engine 4 plus generation. Beautiful visuals Induction into the fighter fleet of the Indian Air Force. from our cameras, With a wide range of weapon platforms, giving you an actual feel of what the fly past entails. Minash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft. Arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं। और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अगली फॉर्मेशन है बाज। इस फॉर्मेशन में एक रफाइल, 2 जैगवार, 2 MiG-29 UPG, 2 सुखोई 30 MKI विमान 7 एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, MiG-29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी। और ये आए पास फॉर्मेशन में। Bars formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here, aircraft. The aircraft will split outwards and upwards, forming a Trishul in the sky. Sukhoi 30 MKI and air after the buzz, we now look forward to the Trishul formation comprising 3 Su-30 MKI aircraft which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput.
This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. और अब जोधपुर से उड़ान भरकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमां को चीरते हुए एक लड़ाकू विमान। In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. 900 kilometers per hour. As these visuals tell you, absolute concentration, Aircraft in command of Group absolute precision, flying from different places, all coordinated to perfection. And now we have the Vijay formation. One Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. Will execute 2.5 turns. Group Captain M. Jam in this aircraft, you can see carrying out the vertical Charlie, touching the sky with glory. आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम और आज़ादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। इस फॉर्मेशन में 17 जैगवार विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा, विंग कमांडर प्रखर, विंग कमांडर रोहित राय, विंग कमांडर सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार। What a splendid display it is. For the first time, we also have some naval colleagues of the Indian Armed Forces flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing, along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines, defining the sky space. And so after enthralling everyone here as these magnificent men in their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. नभम स्पर्शम दीप्तम, आकाश की ऊंचाइयों को शान से छूना है, ये मूल मंत्र है हमारी वायुसेना का। रोंगटे खड़े करने वाले और सभी को रोमांचित करने वाले फ्लाई पास्ट के हम यहाँ राजपथ पर साक्षी बने। And what a splendid display it's been today. From the solo power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine, inspirational, rewarding, and definitely applauditory. For many of us, witnessing this fly past, these are memories that we are going to capture and keep with us for a very long time. And today we saw the limitlessness of the sky, setting the tone for the limitless passion, experience and skill of our pilots. For any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively, and we are living those reasons collectively as we all come together to celebrate our national festivals. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And so, let us then rededicate ourselves today to ensure that the safety, sanctity and security of the country comes first, always and every time.
जब हम भारत के गणतंत्र बनने के बाद के इन वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं। सही मायनों में भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिस पर राष्ट्रवासी गर्व महसूस करते हैं। Freedom in the mind, strength in the words, pureness in our blood, pride in our souls, and zeal in our hearts. As we salute the Republic of India, 1,000 salutes. The President's bodyguard taking position now as we come to the close of the 73rd Republic Day Parade. Commonwealth President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। And now, as is traditional on this celebratory day, with the President and the Prime Minister also greeting each other, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians, as if moving towards a higher calling. India, a young country on the move and aspiring. Visual images have a way of imprinting themselves on our minds, and then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। समृद्ध परंपराओं, एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजपथ पर आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से। In fact, ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. And whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. This is the charger Virat, the PBG Commandant's horse, steed, trusty steed, which is now being bid adieu. As we shared earlier with you, Virat retires. He's also been presented with the Chief of Army Staff's commendation card. And it's a very sentimental moment for the Commandant of the President's bodyguard.
This majestic steed, graceful arch of the neck, beautiful gentle trot has seen 10 Republic Day parades. Another successful Republic Day celebration here in the capital, New Delhi. The Prime Minister and Defence Minister seeing off the President. They celebrated with gratitude when India became a child of its own destiny. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर, जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई। वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है, राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गुजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सब ने महसूस की। संस्कृति, नृत्य, सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी और सिर्फ प्रशंसा, चौतरफा विकास, प्रगति का रास्ता तय करता हमारा देश, जिसका साक्षी बनते हुए हम सभी राजपथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस अवसर पर As the curtains come down on the celebrations at Rajpath, the celebrations actually continue and carry on across the nation as everyone gets together to unfurl the national flag. The infectious celebratory spirit prevailing as all of us rejoice in our republic across the country. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, walking towards where the spectators greet him eagerly, all waving their hands and acknowledging the Prime Minister's greeting as he wishes them on this 73rd Republic Day parade. All witness to the grand spectacle that unfolded on Rajpath, a historic parade celebrating 75 years of India's independence, the pomp, the pageantry, the grandeur, all rolled into one as a beaming Prime Minister walks down Rajpath, acknowledging the greetings of his citizens. The newly refurbished Rajpath with the backdrop of the scrolls that were hand-painted, telling us stories of the unsung heroes. A special moment for all the spectators who are here to be able to see the Prime Minister close up. A moment that they're not going to forget very easily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित दर्शकों के बीच अक्सर पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए भी एक क्षण ऐसे हैं जिन्हें वो कभी शायद भूल ना पाएं। So though the parade concludes at Rajpath, the Prime Minister, which has also become a tradition now, walking along the enclosures, greeting the people and acknowledging their greetings. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population
that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. दर्शकों को इन्हीं पलों का इंतजार रहता है क्योंकि और यही दृश्य हम राजपथ के इस मौके को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आम जनता की योजनाएं हो या फिर सबूत दिया है 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को बहुतों के लिए यादगार बनाया है। Indeed, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the common man, 75 years of wisdom, progress and achievements, so we all join. Prime Minister Narendra Modi prepares today sending out this group. यहाँ लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहाँ लोगों का। राजपथ जहां आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होकर गुजरी, महामहिम राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और एक भावुक क्षण तब भी आया जब उनके घुड़सवार अंगरक्षकों ने अपने वरिष्ठ घोड़े विराट को आज विदाई दी। A bird's eye view of the venue here. The velvety grey Rajpath witness to another beautiful celebration. हम उस स्वप्न को सार्थक करने और उससे भी आगे का सफर तय कर रहे हैं जिसे भारत के गणतंत्र बनते समय देखा गया। पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे वंदे